वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एनी एपी यू हैव गिवन सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी इक्वल्स टू 24। दैट मीन्स कोई भी एक एपी हमारे पास है, उसके थ्री टर्म्स का सम हमें 24 गिवन है and the product of the numbers of an AP of three numbers of an AP equals to 440. You have to find all the three numbers. Okay students, question is clear. Now the solution is, let the three numbers in AP, let the three numbers in AP are a minus d, comma a plus d. Okay, these are three numbers which are in AP. Now according to question, sum of three numbers, that means हमें तीनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस कर लेना है। a minus d plus a plus d equals to 24. Okay, now the d's cancel out, you get 3a equals to 24. 3 से 24 आपका कैंसिल, you get a equals to 6. Now the second condition of the question, product of these numbers, that means a minus d into a plus d equals to 440. Putting the value of a, the value of a is 8. Putting the value of a, 8 minus d equal into 8 plus d equals to 440. 440 divide by 8 both side, you get 8 5 is 40, again 4 remainder, 8 5 is 40. Now in 8 minus d and 8 plus d, you can use the formula a minus b into a plus b, that is a square minus b square. That means 8 square minus d square. You get d square equals to 64 minus 55, that is 9. Then the value of d is plus minus 3. Okay, आपको फाइंड आउट करने थे थ्री नंबर्स, तो नंबर्स हमारे कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, सेकेंड इज a, थर्ड इज a प्लस d. Putting the value of a and d, first of all a is 8 and d is 3, you get 5. a is 8 and 8 plus 3 equals to 11. So numbers are which are in AP 5, 5, 8, 11. Again, if you put a equals to 8 and d equals to minus 3, then the required number a minus d, that means 8 minus 3, that is 11, is 8, and the third number a plus d, a is 8, d is 3, equals to 5. In this case the numbers are first number is 11, second is 8, third is 5. If you put a is 8 and d is 3, you get the numbers 5, 8 and 11. If you put a equals to 8 and d equals to minus 3, you can get 11, 8 and 5. Okay students, now we move to next question. The next question is question number 2. Given f is any function
which satisfied fx plus y equals to fx into fy. Satisfy the function fx plus y equals to fx into fy for all x y belongs to natural number. Given also f1 equals to 3 if summation x equals to 1 to n fn equals to 120, then find the value of n. Okay students, now start the solution. Put x equals to 1 and y equals to 1 in given relation. You get f1 plus 1 equals to f1 into f1. क्लियर? हमने क्या किया, इस x और y के प्लेस पर हमने दोनों जगह 1 रखा. क्यों रखा 1? क्योंकि x और y दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं. तो यू गेट f2. f2 इज f1 की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है, कितनी है 3. तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9. f2 is 9. Again put x equals to 1 and y equals to 2. Then you get f1 plus 2 equals to f1 multiply f2. The value of f1 is given, that is 3, and the value of f2 you have to find just now, that is 9. You get 27. Okay, similarly put x equals to 1, y equals to 3. You get f1 plus 3. यहां पर ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, f3 की. f1 plus 3 equals to 1 into f3. Now f4 equals to f1 is 3 already given, f3 just now you have to find 27. You get 81. So f4 is 81. Clear? Now according to question, the sum of x equals to 1 to n fn equals to 120. समेशन मीन्स आपको x की वैल्यू रखनी है 1 से लेकर n तक, आफ्टर दैट उनको ऐड करना है. तो मैं रख रहा हूँ f1, पहले मैंने 1 रखा, fx है, f1 f2, that is the fx in the question, that is the fx, f2 f3 अप टू कहां तक रखेंगे आप, fn तक, और ये गिवन है आपको 120. क्लियर? now the value of f1 is given 3 and f2 you have to find 9 and f3 you have to find 27 and so on up to n terms equals to 120. Now this series is GP, so you use the formula of GP, sum of n terms. First term is 3 and common ratio is 9 upon 3 equals to 3, which is greater than 1. So you use the formula a r raised to power n minus 1 upon r minus 1 equals to 120. a के प्लेस पर 3 and r is also 3, power is n minus 1 upon 3 minus 1 equals to 120. Now 3 minus 1 is 2 and 3 raised to power n minus 1 equals to 120. अब 3 से हम कैंसिल आउट कर रहे हैं इस 120 को, तो यू गेट 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 4 जा 12, तो 40 इंटू दिस 2 you get 3 raised to power n equals to 80 minus 1 is plus 1, that is 81.
अब 81 किसका फैक्टर होता है 3 की टाइम्स में, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, that is 3 raised to power 4. On equating you get the value of n is 4. Value of n is 4. I hope that the question is well defined. Okay students, like in this manner you can solve other questions of your exercise. अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे आपका नेक्स्ट चैप्टर. थैंक्स.